of him, and we are really happy to have him here. He's going to join us in a short while along with the management team, and at the same time we have one of the best of the celebrities of Indian cinemas who's going to join us, who does a lot of Kannada movies and also doing a lot of other language movies. Well, ladies and gentlemen, before we start with it, I have a small gift to be given away to you. When I was coming in here, I just got to know from the CEO and rest of the team and all that the crowd which I can see the love and affection people have towards you. When you're walking onto the stage, they are standing for you. That's a real big achievement in life, sir. Really great to have you here, and I'm happy to be the host of this event. And also, ladies and gentlemen, I request the actress will be joining us in a short while to talk about the actress. It's been very popular in the Kannada industry. And in the Indian film actress, she is the Indian film actress, popular in the Kannada film industry. She has several commercial successful films to her credit, and is perhaps the best known for her critically acclaimed performance as Devika, a mentally challenged girl in Manasare, and there's been a lot of achievements in the film industry. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Give a big round of applause for Andrita Ray. Thank you so much for joining us, and it's a pleasure to have you right here. Now, ladies and gentlemen, the world by itself is going to witness something really interesting and one of its kind now with the launch of a product by Sammy Direct. Request you dignitaries to the honors. We are present here to do the launch of a beautiful product which is created by obviously you, sir. Ladies and gentlemen, are we all set for it? Yes? Yes! Yes, sir. We have the product, we have magic, okay? All we need to do is, we just need to touch the screen, and the screen by itself will go aside. And request everybody to kindly give the space for the media this side. And we'll stand a little away. Let's give the front space for the media, and we'll all stand around. May I request you to do the honors? Ladies and gentlemen, presenting you Leangard protein drink mix, which is available to you in two flavors. That is mango flavor and the vanilla flavor. With this, ladies and gentlemen, we are going to make a healthy world. Brought to you by Sammy Direct, synergistic weight management formula with GI blend. Let's hear it and go. Big round of applause for the Leangard protein drink mix, which is a synergistic weight management formula with GI blend, which is a dietary supplement. Well, ladies and gentlemen, let's go. Big round of applause. We have announced the launch of Leangard. Tomorrow, we're going to have a new sunrise, a new day, wherein we're going to create a healthy morning and at the same time, a healthy world. Along with the business, we are thinking about the people themselves to be healthy and fit. Ladies and gentlemen, we have Leangard protein drink mix with two flavors, that is mango flavor and the vanilla flavor, which is loved by everyone present out here. Thank you so much for doing the honors of launching Leangard. It's a pleasure to have you right here. Amrita, request you to kindly take your seat. And sir, we request some of these lights will turn off if you right in your face. You can't see anybody there. It doesn't matter, it doesn't. And what is not mentioned is from one of the Sami group companies,
organic aromatics. The president of the group, Dr. Mahesh is here. Mahesh. And our CEO and Director B.G. Nair is here. And whether you know it or not, the gentleman who takes a lot of pain in creating these products is Mr. Ajay Joshi. He's also here. Then of course, wanting to make sure that everything goes right on time and online, Samir Nair is also here. Now, many of you have seen products introduced by multinationals into India. Samir Direct is part of a multinational based out of Bangalore. I could have based that out of New Jersey. I decided I will base it out of Bangalore. Now, when we bring a product out, we make extremely unique. And you will see that coming. Now, today, there are a number of companies that market protein powders. This is not just any other protein powder. Jayesh has taken the responsibility to explain to you what DIM is, what difference that makes. It's an excellent product. Only from a research group, a product like that will come. Somebody just wanting to introduce a product will not be able to bring out a product like that. Somebody who is hell-bent on research and innovation. And our MC here mentioned about the 70 patents that we have. Correction, make it 71. Innovation is what drives us. Innovation will continue to drive us. We will bring those products to you. Like I said before, 98% of our income, Sami, used to be from overseas sales. We sold very little in India. Since Sami Direct, we are coming to India. And thanks to many of you and your continued support, I think we will continue to do well. Today is the day for Jayesh to show what he has done. So I am going to speak less and I am going to hand it over to him. For that, Dr. Soni is also here. Dr. Soni. He is the one who worries about money for me. Who wants this? Thank you, Doc. Good afternoon. Good afternoon. A warm welcome to all of you. Dr. Majid, Mr. Shetty, Dr. Sood, Dr. Mahesh, Mr. B.J. Nair, Dr. Som, Ajay Joshi, and all my leaders from the entire country. Thank you for coming to Bangalore and being a part of this wonderful launch. And today, this is another stepping stone in the history of nutrition, I will say, because we are bringing a revolution in the protein segment or a protein-based product. Today's world, the biggest challenge for everyone is basically to have or maintain an ideal diet. And the entire industry, the pharmaceutical industry, the doctors, the pharmaceutical companies, their research is focused on disease. But with the 22 years and many more experience of Dr. Majid and the entire group, we are trying to bring much more than that. The origin of disease, how the disease is originated. Basically, if we control or if we watch what we eat, then we can delay or avoid the disease. So I think today we are bringing something to correct our diet, to add something to our diet, what is most needed in the form of diet. And I am really honored to present one of the most innovative product what Dr. Majid has mentioned, the protein
drink mix with dip. Ladies and gentlemen, please remember this word, dip. That is what actually makes our product unique. There are many protein supplements in the market, marketed by n number of companies. But why our product, our Leangard protein drink is unique, is something we would like to see, understand today, and take it to every house and to every individual in the country. It's an ideal protein-rich diet. Protein is a very important part of our daily life, and it has to be consumed every day, and it has to mainly come from our food source. It helps in the weight management, and it contains the essential micronutrients and contains the unique digestive intolerance blend. Let's understand in detail what our Leangard protein contains. We can divide the product into three segments: the macronutrients, the micronutrients, and the digestive intolerance blend. Let's look at the macronutrients. The major ingredient of the macronutrient is protein. Protein is a macronutrient that body needs to grow to build the tissues, and it is being known as the body building structure cell. The dietary proteins are the source of amino acids. When the protein gets digested, it is broken into amino acids, and which are the essential composition that the body requires for the growth of muscles, skins, eyes, hair, body organs, enzymes, and hormones. Too little protein in the diet. If we consume less protein, it will result in the gradual breakdown of the muscle mass and the muscle tissues. So it's very important for us to have sufficient quantity of protein in our diet, and the ideal requirement is 1 gram per kg body weight. As I mentioned, it helps in building and repairing the body tissues such as muscles and all the essential body components. It flattens the glycemic response. How? Because of the slow digestion of the protein, it flattens the glycemic response. 1 gram of protein gives equivalent calories as 1 gram of carbohydrate. So our energy source, what is required for the body, comes from protein. Highest satiety index. What do you mean by satiety index? Satiety index means we feel full. That means we don't feel hungry. How it happens is basically because of the slow digestion of the protein, the satiety index is high. It takes time to digest the protein, so we feel full. Highest thermic effect. This is a very important aspect of protein and the Leangard protein drink. What do you mean by thermic effect? To digest the protein, the stored energy is being consumed by the body. Whatever the energy is consumed in the body in the form of carbohydrate or fat is being consumed to digest the protein. So it creates the highest, or the protein has the highest thermic effect when compared to carbohydrate and fat. That means if you consume more protein, whatever the energy stored in the body is being used up, and the protein has the highest thermic effect, and because of that all the stored energy is being consumed. So we need to understand why it helps in maintaining an ideal weight, or basically helps increasing the lean body mass. By building the muscle mass, it increases the lean body mass. Lean body mass includes all body components except the water and fat. Some of the sources of protein: animal proteins and the vegetable proteins.
Compared to vegetable proteins, animal source of proteins are known as the complete source of proteins when compared as it is. PDCAS. This is the method of evaluating the quality of protein based on the amino acid present and the ability of digesting these amino acids. And the maximum possible score is 1. That means the best protein in the world will have the score of 1. Higher the score, better is the score of protein. You see actually casein, egg white, soy protein, whey protein has an PDCAS score of 1, which means they are having the highest quality and the digestibility of the amino acids. And our Leangard contains the best quality of soy protein and whey protein. And from the world known sources, our soy protein comes from the largest vegetable protein or the soy protein company, and our whey protein comes from the biggest source of the whey protein and one of the most reputed source of whey protein manufacturer. Let's understand the soy protein in our Leangard. The best available vegetable source of protein. Good substitute for animal protein because of its high fiber content, the micronutrient, and reduced saturated fat content. Because of this, it aids in the weight loss by increasing the satiety. We already discussed about the satiety because it gives us a feeling of fullness in the stomach because of the slow digestion of the protein. So, because of that, we don't feel hungry, and it helps in maintaining the weight. Slowing the gastric emptying. What does gastric emptying means? Because the transfer of food from stomach to small intestine is delayed. Lean body mass is increased because of the increase in the muscle mass. The lean body mass increases. Decreased fat mass because of the high thermic effect. The fat mass decreases. Also reduces the triglycerides, cholesterol, low density lipoprotein levels. Whey protein, it is the byproduct after when you produce the cheese from the milk. It is easily absorbed after digestion because of the high biological value of protein. That means biological value means absorption of amino acid by the body. The biological value of whey protein has got the highest biological value compared to all other proteins. It helps in the weight loss by reducing the fat mass and increasing the lean body mass. The second important component in the macronutrient is carbohydrate. We all need carbohydrate. Carbohydrate means energy, but the energy should come from the right source of carbohydrate. We all need the carbohydrates basically from fibers or polysaccharides or complex carbohydrates. So our source of carbohydrates are basically fiber. Carbohydrate supplies energy to the body. 1 gram of carbohydrate gives 4 calories of energy basically. 1 gram of protein also gives 4 calories of energy. 1 gram of fat gives 9 calories. So this is basically the right source of energy what we should have in our diet. Carbohydrate provides the fuel to the tissues. As protein is the building block, carbohydrate provides the fuel to the tissues such as muscular tissues, nervous tissues, and all other tissues in the body. Carbohydrates spare protein in the body. So it avoids the breakdown. It avoids the breakdown of muscle mass. Carbohydrates are supplied. Our source of carbohydrate is basically from the fibers, which are complex carbohydrates or polysaccharides. Dietary fiber. Basically our source of carbohydrates are dietary fiber. So our product contains dietary fiber. When compared to all the proteins or the protein based drink in the market, our product contains the highest quantity of the fiber. And as per the Indian RDA, we have to consume
approximately 40 grams of fiber per day. That's very important. It should come from our daily diet or from supplementation. So complex carbohydrates or dietary fibers are from the plant source, which are not digested by the human body because we don't have the enzymes to digest the complex carbohydrate or the dietary fiber. So it remains in the gut and it helps for lot of other actions, which we'll talk about in the probiotics and prebiotics. Probiotics. This is the third important component which is unique in our product. Probiotics are basically the good bacteria which the body requires to digest the food to maintain a good gut health. Prebiotics. What are prebiotics? Prebiotics in simple term is the food for probiotics. To produce these good bacteria, we need sufficient quantity of prebiotics in our body. So in order to develop the probiotics, we need to have sufficient food for the probiotics. Otherwise we will not have probiotics in our gut. If the prebiotics are not there in sufficient quantity, we need to supplement it externally through our food, and we are getting it from our Leangard. A mixture of probiotics and prebiotics is known as symbiotic, which a combination of both will help us to maintain a good gut health and digestive health. Inulin. This is one of the source of prebiotic which our Leangard has got. It's a soluble fiber and it is a prebiotic which is basically a food for the bacteria to grow in the gut. And also it being a soluble fiber, it promotes satiety and give a feeling of fullness and improve the lipid profile by reducing the triglycerides and the cholesterol. Gorgum. It is another soluble fiber which our Leangard has got. Because of the slow digestion, it remains in the stomach. It has got a high satiety index. Helps to regulate the bowel movement because it expands in the large intestine and helps in the good bowel movement and also addresses any irritable bowel syndrome. Let's look at the third element, second element, micronutrients. Vitamins and minerals. They are the micronutrients which are required in a very small quantity. But today's challenge is basically to get all the essential micronutrients in the right proportion through our diet. Whatever we are consuming from morning to evening, our diet, if you look at, actually we don't get all the essential micronutrients in the right proportion. And that's why we have one or the other problem with some of the organs, because we don't get the right proportion. So our Leangard contains all the essential micronutrients in the right proportion to satisfy the body requirement. Micronutrients are very essential for maintenance of skin, bones, mucous membrane, hair and vision, nervous system, formation of RBC. It acts as a coenzyme, which is the most important metabolic enzyme, plays in the role of energy metabolism, production of energy in the ATP, regulates fluid and acid-base balance. It's very important to maintain the right balance of the fluid in the body, and our Leangard micronutrients helps to maintain the right fluid balance. Let's look at the detail of vitamins present in the product. Vitamin A, you can see the second column is the RDA and the third column is the per serving, what is there in the serving. We have to consume vitamin A 2000 IU, we have got 1000 IU from the single serving. Similarly, vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, niacin, pyridoxine, vitamin B12, biotin, folic acid, pantothenic acid. So you get all the essential vitamins, all the micronutrients which is required for the daily function of the body
as per the RDA, we are getting a large quantity from the single serving of the product. These all are the various minerals: potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, chromium, iodine, molybdenum and selenium. You can look at the RDA and also look at how much serving we are getting from the per serving, the dosage. It's also very important actually to have a safe dosages. We don't want to go 200% of RDA. The food has to be healthy as well as safe. The most important part, the minerals and the trace element. The other products available in the market are using some of the sources which are not acceptable or accepted by the body or absorbed by the body or tolerated by the body. We are using the minerals which is one of the best in the world and the proprietary product of Sabinza Corporation. Selenium as selenomethionine from Selenium Select. It is our patented product. Zinc as zinc monomethionine. Chromium as chromium picolinate. Iron as ferrous gluconate. Molybdenum as molybdenum ethionate. These all are one of the best available sources which the body can absorb and we get the maximum advantage from that. The third component is DI blend. I would like to draw your attention because this is the differentiation of our product from the rest of the product which are available in the world, which none other protein product has got. And digestive intolerance band, you can see the asterisk which shows at the bottom the patent pending. The one more patent we will soon see or hear will be on the tip. The main function of the blend is to increase the digestibility of the protein. It is very important. Protein is not digested as such, but we need to ensure that whatever the protein we are consuming, it need to be digested well. And also the biological value, that means the absorption of amino acids, has to be increased. We need to have a mechanism in a way, whatever the protein we consume, once broken down into amino acids, it need to be absorbed by the body. The functions: it reduces the food allergy, it reduces lactose intolerance. Many people are allergic to milk products, so we have whey and the whey protein. So any people who have got lactose intolerance, our dip addresses that challenge. Improving the normal good bacteria in the digestive tract. That's basically the probiotic activity. Let's understand in detail how the dip works. Protease. Protease is an enzyme which is helpful to digest the protein. So whatever protein we are consuming, it is digested. That means once the protein is digested, the amino acids, it gets converted into the amino acids, and it increases the absorption of amino acids. That means whatever the protein is being consumed, that gets broken down into amino acids, and it is very essential for the body to absorb the amino acids which is being released on the protein. Prevents the protein allergy and the intolerance. So protease takes care of the digestion and the absorption of protein and amino acids. So that is the number one function. The number two is lactase. Lactase is an enzyme which is required to digest the lactose, which is milk solids. So all the protein or from the milk, if we have any other milk product also we are taking, we need to have lactase, an enzyme which is produced in the body to digest the milk related protein. So if the body does not produce lactase, we will have that challenge. So our dip contain the lactase in the right proportion so that we can address the intolerance or the absorption of milk protein. Beneficial for lactose intolerant individuals. The third element in the dip is lactospore, which is a probiotic, which contributes, it's basically the good bacteria. That means you are directly adding the good bacteria into the body to improve the gut
function and the digestive function. It also prevents the infection in the gut and relieves diarrhea. Let's look at in detail how lactospores reduces the load on the kidney. Ladies and gentlemen, the protein supplement in the market, protein is very important, no doubt about it, but also the company which is introducing the protein has to ensure that the protein given to a body needs to be digested and absorbed well and tolerated well. And our DIP ensures that, which makes the product unique when compared to any other protein product in the market. And it is not a magic, it is pure science which is coming from the stable of Sami Sabinsa group of company. And again, very soon I mentioned that we will see another patent coming from our own DIP. So what happens is, let's understand in detail. Proteins when get absorbed, protein when get broken down into amino acids, which is released in the body. This amino acids has to be absorbed by the body. If the amino acid is not absorbed by the body, then what happens is basically it creates a nitrogenous waste in the body. And any waste or any toxins has to be, who is the housekeeping person of the body? Kidney. So the poor kidney has to flush it out from the body. So because of the non-absorption of the amino acids, what happens is basically it gets converted into nitrogenous waste in the body. And when it gets converted into nitrogenous waste, the kidney's workload increases. It has to flush out all the toxins in addition to what all the other garbage is produced. Now let's understand what happens in our case. We have lactospores, our own patented product in our Leangard as probiotics. And this nitrogenous waste, suppose in some people, if the amino acids are not absorbed by the body and some amount of nitrogenous waste is there in the body, it is being utilized by the lactospores as food. The lactospores is the food for the nitrogenous waste is the food for the lactospores, and it keeps growing into the body. So what happens? The lactospores consumes the nitrogenous waste in the body. Are you getting it? Yes. When the amino acids are not absorbed by the body, it gets converted into nitrogenous waste, which is toxic, which has to be flushed out by the kidney. And this leftover amino acids, the nitrogenous waste, is being consumed by the probiotic lactospores as a food, and it increases the production of probiotic lactospores in the body. And in that way, it consumes the nitrogenous waste in the body and reduces the workload on the kidney. So that means our protein, Leangard protein drink, does not, first it actually addresses the absorption of amino acids compared to any other product, number one. Number two, if there are any unabsorbed amino acids and which get converted into nitrogenous waste, it is being used by the lactospores as food and get converted into probiotic, which is again good for our gut health. So that means it reduces the nitrogenous waste in the body and it reduces the workload of kidney. Is it science or is it magic? Science. Very good. So let's recap actually what is there in our Leangard. It has got the high protein content, which is the right source of energy we should have. It increases the muscle mass and it reduces the fat mass. And it also increasing the muscle mass, it increases the lean body mass. It is useful for people to gain weight. Who can consume the Leangard protein drink? Everybody. Can people who want to gain weight can consume Leangard? Yes. Yes, they can. How they can gain weight? By adding Leangard to their
nutritious, balanced diet. They can gain weight by adding Leangard protein with their diet. The next, people who want to lose weight, how they can lose weight? By substituting 1 or 2 meal with the Leangard protein drink. Then what about people who don't want to lose weight? Can they take Leangard protein drink? Yes. People who don't want to lose weight. Yes. People who don't want to. Everyone require a balanced diet of comprising of protein, fiber, amino acids, micro and the micronutrients. So people who want to maintain weight also can use the Leangard protein drink mix. Basically what Asif said, the next morning, tomorrow morning we should wake up with our breakfast should have Leangard protein drink. How many of you are going to make tomorrow morning breakfast as Leangard protein drink? Only this much? Good. So it is ideal product for losing weight, gaining weight and maintaining a good state of health. In all three situations we need, because we all need balanced micronutrients, macronutrients and a good balance of prebiotic and probiotic. As we see, it provides a protein-rich diet, increasing the lean body mass. It provides the right balance of prebiotic and probiotic. Prebiotic ensures the production of probiotic in the body, and probiotic ensures a good health and digestive health. Contains the unique PI blend, which ensures all the functions of the protein, absorption of the functions, and reduces any possible load on the kidney. Fortified with all essential micronutrients which the body requires. Ideal for any type of weight management, be it weight gain, weight loss, or maintaining a good state of health. How to use the product? The ideal recommendation is 25 grams of Leangard should be mixed with 200 ml of skim milk, preferably whole milk or water or any other beverage of your choice. Some of the people can add a couple of fruit or a banana or a piece of apple into the milkshake to add some more nutrition to the product. But it can be consumed even with water, because it provides 140 calories, 8 to 9 grams of protein per serving, plus 3.1 grams of fiber, all the essential micronutrients, the vitamins and the minerals, and the prebiotic and the probiotic. So it's an ideal meal to start with in the morning. It can be safely consumed by the children above 12 years. A lot of people ask the question, what about 2 year, 3 year? There are not enough research being done. The kids require the different diet and they have a different RDA. But it is always advisable to be consumed by the children above 12 years. Any diet should be taken along with a sensible diet and exercise. The Leangard, just consuming Leangard will not do the magic. Basically, we need to have a sensible diet. We need to watch what we eat. We are what we eat. So basically, whenever you eat, you look at the plate, what are you eating? Because only these products will add to achieve results and a better state of health. But this alone, you cannot leave alone to this product. It has to be combined with a sensible diet, adequate exercise, and a good water intake. In Bangalore, when compared to coastal regions, we don't have enough water intake, which is not good. So this is very important basically, because if your folders, if you look at the first page, that talk about a sensible diet and a good lifestyle. Ladies and gentlemen, it was a real honor to present our revolutionary protein drink mix to all of you, and it was a real honor and a privilege for me to present this to you. And I hope this Leangard will power your business, power the health of your loved ones, and we have a responsibility to take this product along with
our entire range of product to every house in India. This is just not a business, but it is a mission of taking wellness to every individual, to every house across the country. And once we reach to every house, first let's actually make our country healthy, and then we will take it to on the global level. Ladies and gentlemen, thank you very much, and So much for joining us, sir. गुड मॉर्निंग। देखिए, एक इन्वेंशन है तालियों का, किस तरह ताली बजानी है शामी के लिए, उसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले आपने हर उंगली को मिला के धीरे धीरे बजाना है, इस स्पीड को बढ़ाते जाइए, लास्ट में स्पीड बढ़ जाएगी, हम बोलेंगे सामी स्टार्ट 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 फास्ट 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 स्टार्ट। सामी, ये इन्वेंशन है हमारा, यहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, इसी तालियों के साथ हम शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जस्ट 10 मिनट मुझे दिया गया है, इसमें हम बात करेंगे सामी डायरेक्ट क्या है, सामी क्या है और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि 71 पेटेंटेड प्रोडक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सामी क्यों करना है। हम लोग 4 मेडिकल साइंस को जानते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक साइंस था, प्राचीन समय से चला आ रहा है। उसके बाद एक साइंस की खोज हुई जिसका नाम है यूनानी, उसके बाद आया एलोपैथी साइंस, उसके बाद आया होम्योपैथी साइंस। ये 4 साइंस जो है, इसका काम है बीमारों का इलाज करना। सही बात है? लेकिन हम जिस साइंस की बात करने वाले हैं वो 5वां साइंस है, जो हेल्दी आदमी को हेल्दी रखता है और बीमारों का भी इलाज करता है। लेकिन हर साइंस के इन्वेंशन के पीछे एक सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन एमडी डॉक्टर बने एलोपैथी में। उस वक्त एलोपैथी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता था, कोई फिक्स रिजल्ट न होने के कारण डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने अपनी लिविंग प्रैक्टिस छोड़ दी और अपने रोजी रोटी के लिए, मतलब कमाने के लिए ट्रांसलेशन का वर्क करते थे। और वो एक बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे, 2500 ईयर ओल्ड बुक, हिपोक्रेट की बुक। हिपोक्रेट यानी कि वेस्टर्न कंट्री के एक ऋषि है जिन्होंने हेल्थ के ऊपर बहुत वर्क किया था। उसकी बुक ट्रांसलेट करते करते एक सेंटेंस पे वो रुक गए थे, लाइक क्योर लाइक, और एक होम्योपैथी साइंस का इन्वेंशन हुआ। यानी कि सैमुअल हैनीमैन एक साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट है। यस और नो? तो ये जिस वक्त जिंदा हो गए उस वक्त उनकी उतनी कदर नहीं हुई होगी। जिस तरह वो एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर मोहम्मद माजिद एक बड़े साइंटिस्ट है, वो आज हमारे सामने है और हम भी सामने हैं। इन्वेंशन हमारे सामने है, उसका हमें यूज करना चाहिए। लेकिन इनके जीवन में क्रांति कैसे आई? सिर्फ एक सेंटेंस नहीं। और वो सेंटेंस क्या था कि वो एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे डॉक्टर लाइनस पॉलिंग की पेपर में कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि जब तक हम जिंदा हैं हम हेल्दी रह सकते हैं अगर हमारे सेल्स को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन और एंजाइम मिले तो। ये एक सेंटेंस ही उनके जीवन में क्रांति लाया और एक क्रांतिकारी खोज का अभियान बढ़ा। और इस अभियान का परिणाम क्या आया है? डॉक्टर साहब इसे कहते हैं एलोवेदा, और मैंने भी एक नाम दिया है मोलिक्यूलोपैथी। ये 5वां मेडिकल साइंस है। आज से 100-200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर मोहम्मद माजिद एक साइंटिस्ट के रूप में जिन्होंने 5वां साइंस ढूंढा उसके लिए याद किए जाएंगे। तो मुझे भी लोग याद करेंगे क्योंकि मैंने मोलिक्यूलोपैथी इसको नाम दिया है। अब इंपॉर्टेंट बात कि आज तक 4 साइंस में से हम भरोसा किस पे करते हैं? ओनली एलोपैथ पे। वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू एलोपैथी साइंस हमारे बॉडी में बीमारी होती है कोई भी केमिकल इम्बैलेंस होने से। कोई केमिकल ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है,
उस केमिकल को बैलेंस करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल केमिकल, उसकी परफेक्ट इफेक्ट है एंड साइड इफेक्ट है, दोनों का एनालिसिस डेटा है। लेकिन हमारे पास कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए ऐसा कोई डेटा नहीं है। हम आंवला को कैसा बेचते हैं? कोई चूरन बेच रहा है, कोई च्यवनप्राश बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है। कोई रिजल्ट आप नहीं कह सकते इसको लेने से क्या होगा। मार्केट में पेटेंटेड दवाइयां बिक रही है हार्ट के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए, कोई एविडेंस R&D नहीं है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद माजिद ने आयुर्वेद में से मॉलिक्यूल निकाला और उसकी स्टडी एलोपैथी स्टाइल में की, उस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री स्टडी और बॉडी की केमिस्ट्री की स्टडी की और परफेक्ट R&D बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा काम करता है तो करता है। फॉर एग्जांपल हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला, करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो हल्दी में से 5% निकलता है, ये एंटी कैंसरस है तो है। 100 में से 90 पेशेंट ठीक होते हैं एविडेंस से। दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर, आप जस्ट नेट पे टाइप करिए, एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है कि हम कैंसर ठीक करते हैं करकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से और सबिंसा के पास लेते हैं। और रही बात रिजल्ट की, मेरे पास टोटल 11 पेशेंट है कैंसर के, उसमें से सभी पेशेंट को अच्छा है, लेकिन एक पेशेंट ने टाटा से रिपोर्ट निकाला, इस प्रोडक्ट को यूज करने के 1.5 मंथ के बाद एक रिपोर्ट निकाला, उसके और 2 मंथ के बाद एक रिपोर्ट निकाला, टोटल 3.5 मंथ में पेशेंट 100% क्योर। अगर कोई इसको जानना चाहते हैं तो टाटा का केस है, फाइल नंबर CH3381 फाइल नंबर, आप उस केस को टाटा से निकलवा के चेक कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारा इंडिया नंबर 1 है। नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नंबर 1 बीमारी में है, डायबिटीज में नंबर 1 है। पूरे दुनिया के डायबिटीज के मरीज को एक साइड रखो और इंडिया के एक साइड रखो, बैलेंस बराबर हो जाएगा। हर साल 25 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, बोन डिसीज कितने लोगों को हो रही है, तरह तरह की बीमारी बढ़ रही है। अगर हमें भविष्य में अच्छी जिंदगी जीनी है, अगर हम चाहते कि हमारी लाइफ हेल्दी हो, तो हमें इस कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। यहाँ पर टोटल 12 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, ये 12वां प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम अपने जीवन में यूज करेंगे तो फायदा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जिंदगी जीते हैं धनसुख भाई के लिए। धनसुख भाई मनी, धनसुख भाई आ गया तो हम लोग जिंदगी जीते हैं मनसुख भाई के लिए। जस्ट खाओ पियो, मजा करो, ऐश करो, एंटरटेन करो, ये सुनो। तो धनसुख भाई और मनसुख भाई के चक्कर में ये धनसुख भाई की हालत खराब हो जाती है, हम लोग क्या नहीं करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि धीरू भाई अंबानी दुनिया के सबसे रईस आदमी है, एग्जैक्टली 23वें दिन यानी 23rd डे को उनको लकवा हो गया था, पैरालाइज, कभी भी अच्छे नहीं हो पाए, पैसा काम नहीं आया। हमारे इंडिया के यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, लेकिन आज भी वो चल नहीं सकते हैं। आज से 7.5 ईयर पहले वो बॉम्बे आए थे तो सब रोड 1 वे वगैरह कर दिए गए थे, और मेरे एक दोस्त ने कहा कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा आने दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूँ, वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, वो ऑपरेशन करा के गए। तो यहाँ मेरा मैसेज ये है कि यहाँ पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हाथ में है कि अलग अलग प्रोडक्ट हमारे पास है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। यहाँ जो स्पिरुलिना है, आप कहोगे हम स्पिरुलिना के बारे में जानते हैं, डेफिनेटली आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्पिरुलिना का। लेकिन इंडिया से जो स्पिरुलिना एक्सपोर्ट होती है वो इंसानों के लिए नहीं, जानवरों को खिलाई जाती है। यहाँ पे जो स्पिरुलिना है वो एक्चुअली ब्लू एल्गी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आज से 200 करोड़ साल पहले ब्लू एल्गी समंदर में पैदा हुई थी, और ये कछुआ जो होता है टॉर्टोइस, वो ब्लू एल्गी को खाता है, इसलिए 300 to 500 ईयर उसकी लाइफ है और वो कभी भी बीमार नहीं गिरता है। 70 की एज में तो बच्चा पैदा करता है, इंसान 70 में दूसरी दुनिया में होता है। तो ये ब्लू एल्गी जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट है, उसके अंदर पेटेंटेड एक प्रोडक्ट मिक्स किया है, बायोप्रिन।
बायोप्रिन का काम है, ये बायो एनहांसर है जिससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जैसे किसी के अंदर मिक्स किया है उसको तो हमें उसका फायदा ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि पाव भाजी पिज्जा खाने से हेल्थ खराब होती है, सही बात है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को जो चाहिए वो पाव भाजी पिज्जा में नहीं है, इसलिए हेल्थ खराब होती है ऐसा कहना चाहिए। ये स्पिरुलिना हमारी ईटिंग मिस्टेक को करेक्ट करता है, बिकॉज ये हाईली अल्कलाइन है और 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरह एक प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फ्री रेडिकल। 1000 से ज्यादा कारण हम इसमें बता सकते हैं कि जिसके द्वारा फ्री रेडिकल बनता है। इसका काम है डीएनए को डिस्टर्ब करना और कोई भी बीमारी को आगे बढ़ने में हेल्प करना। अगर ये आर्टरी के सेल्स पे अटैक करता है, क्यों अटैक करता है? क्योंकि फ्री रेडिकल के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सर्च करता है। अगर वो आर्टरी के वॉल से इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्री रेडिकल कुछ सेटल हो जाता है, आर्टरी के सेल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अगर ये प्रोसेस चलती रही तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए आप एक कोई अच्छी सिटी में एक रेलवे स्टेशन के पास जाकर एक डॉक्टर को लेकर बैठ जाओ, जस्ट चेक बीपी, जिसकी उम्र है 30 क्रॉस एंड बिलो 35। 100 लोगों का अगर आप प्रेशर चेक करेंगे आपको सरप्राइज होगा, 40 to 45 लोगों को बीपी हाई मिलेगा और वो आदमी मजे का लाइफ जी रहा, उसको पता ही नहीं उसको हाई बीपी है। तो फ्री रेडिकल को मैनेज करना जरूरी है। यही फ्री रेडिकल सेल्स के डीएनए को डिस्टर्ब करेगा तो कैंसर, सोरासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। और मेन थिंग एजिंग प्रोसेस ये फास्ट करता है। जैसे कि आपका दोस्त कोई आपसे छोटा दिखता होगा सेम उम्र का, तो कोई बड़ा दिखता होगा, या आप ही सबसे छोटे दिखते होगे या आप सबसे बड़े दिखते होगे। एक ही एज का आदमी कोई यंग और कोई ओल्ड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल मैनेजमेंट। जिसका बॉडी जितनी अच्छी तरह फ्री रेडिकल को मैनेज करेगा वो उतना ही यंग और फिट दिखेगा। एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। अगर आप लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? नो। तो उसका ओनली एंड ओनली ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल मैनेजमेंट करिए, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, आप फिट रहोगे। एक प्रोडक्ट है, कितनी देर राजेश जी, कितनी देर बोला? हाँ ठीक है, नहीं क्योंकि मुझे 10 मिनट बोली गई थी, अभी 20 मिनट हो चुकी है। हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? हमारी उम्र जब तक 30 और 35 होती है तब तक हमारा बॉडी हमारे फूड इंटेक में से 320 mg कोएंजाइम बनाता है। जैसे ही 30 या 35 हमारी उम्र क्रॉस होती है तो ये कोएंजाइम 20 to 80 mg कम बनता है। तो कमी बनेगा, आप कितना भी हाथ पैर मारो, प्राणायाम करो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ओनली एंड ओनली ऑप्शन है कोएंजाइम ही लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं ये कोएंजाइम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी खोज है। इसको मैं संजीवनी कहता हूं। संजीवनी का मतलब कि एक मुरझाए हुए पेड़ को फर्टिलाइजर और पानी डालो तो वो खिल जाता है। इसी तरह ये कोएंजाइम इंसान को वापस यंग एंड फिट बना देता है। ये कोएंजाइम का मेन काम है हमारे शरीर के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन को ठीक रखना, जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है और डीएनए को हेल्दी रखता है। इसका मेजर स्टॉक हमारे सॉलिड ऑर्गन किडनी, हार्ट एंड लीवर में होता है। अगर आप एक आदमी से कल बात की और आज न्यूज आता है कि वो आदमी हार्ट अटैक से गुजर गया, इसलिए कि हार्ट के अंदर कोएंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, उसको बचने का मौका नहीं मिला। अगर ये लिवर में कम होता है तो लिवर फेल होता है, किडनी में कम होता है तो किडनी फेल होती है। इन दिनों बड़े बड़े शहर में किडनी फेल्योर पेशेंट बहुत है। अगर मैं कहूँगा आपको डॉक्टर बनना है तो डायलिसिस के डॉक्टर बन जाइए, मशीन लगा लीजिए, मशीन खाली रहेगा ही नहीं, इतना फूल जाएगा, इतने किडनी पेशेंट बढ़ चुके हैं। और ये कोएंजाइम हमारे मसल्स में होता है। अगर नी के मसल्स में कोएंजाइम कम होने की वजह से नी के जो मसल्स हैं वो लुब्रिकेंट कम बनाएगा। 30-35 के बाद कोएंजाइम कम बनना शुरू होता है तो नी का मसल लुब्रिकेंट कम बनाएगा, तो नी के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो डिजेनरेट होने की प्रोसेस शुरू होगी। 45-50 तक आप वाजपेयी की फैमिली में चले जाओगे, यानी कि आर्थराइटिस हो जाता है। तो 30 साल की उम्र के बाद कोएंजाइम की हमें जरूरत है। इसके अलावा क्या है? मैं
एक है डिटॉक्स जिसका नाम है अभी टॉक्सिक फ्लश रखा गया है। मैंने 1000 लोगों की एक मीटिंग बुलाई। कौन थे वो 1000 लोग? जिन्होंने न्यू कार खरीदी थी, न्यू कार। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कितने लोग अपनी कार की सर्विसिंग नहीं कराएंगे? कितने हाथ ऊपर आए होंगे? एक भी नहीं, एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। इसका मतलब कि आप एक कार खरीदते हो तो ईयरली 3 to 4 टाइम सर्विसिंग कराते हो। क्या कार कीमती है कि शरीर कीमती है? क्या जूता कीमती है कि पैर कीमती है? क्या पेट कीमती है कि पराया खाना कीमती है? सर कीमती है कि पगड़ी कीमती है? सर। तो इसीलिए ये बॉडी कितना कीमती है पता नहीं। ये भी एक गाड़ी है, इसको भी साल में 3 या 4 सर्विसिंग चाहिए। इतने टॉक्सिन हमारे बॉडी में होते हैं। तो टॉक्सिक फ्लश जो प्रोडक्ट है उसको साल में 3 सर्विसिंग करनी चाहिए ताकि आपका बॉडी में सर्विसिंग प्रोसेस होगा। कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो है एंटी कैंसरस है। अगर कैंसर के मरीज को 2 टैबलेट 3 टाइम्स देते हैं तो मिराकल रिजल्ट आता है कैंसर के मरीज के लिए। एंटी इंफ्लेमेटरी है। अगर मसल टेयर है या डैमेज है या अचानक आपको चोट लगी है, एक गोली 3 बार खाने पे 3 डेज के अंदर मिराकल रिजल्ट आता है। रोज 1 गोली खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को भी 2 गोली 2 बार दे सकते हैं। इसलिए कर्कुमिन C मल्टीपर्पज यूज है। हमारे प्राचीन समय से इसका हम लोग यूज करते हैं। इसकी खोज हमारी आर्यन संस्कृति ने की थी, क्योंकि आर्यन संस्कृति के लोग सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। सूर्य का कलर गोल्डन है, अग्नि का कलर गोल्डन है, कर्कुमिन का कलर भी गोल्डन है। इसीलिए हमारे यहाँ तो हर चीज में हल्दी यूज होती है। जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, पेन आ गया, स्ट्रेन हो गया तो हल्दी यूज करते हैं। मैरिज के टाइम हल्दी यूज करते हैं, कुकिंग में हल्दी यूज करते हैं, ऑलवेज यूज करते हैं। लेकिन हल्दी के अंदर ऐसा क्या है ये किसी को भी पता नहीं था। डॉक्टर मोहम्मद माजिद है, इन्होंने दुनिया को पहली बार बताया। इसलिए एक न्यूज आया था 1999 में कि हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, हल्दी हमारे हाथ से गई। अमेरिका की सबिंसा कॉर्पोरेशन ने हल्दी को पेटेंट कर लिया। पढ़े लिखे लोग काफी चिंतित हो गए थे। लेकिन दूसरे दिन न्यूज में यह बताया गया कि हल्दी की रिसर्च बेंगलोर में हुई थी, सबिंसा कॉर्पोरेशन ने की थी। सबिंसा कॉर्पोरेशन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, हल्दी हमारे पास ही है। इस तरह टाइम टू टाइम रिसर्च होते गए, प्रोडक्ट आते गए, रिसर्च होते गए, प्रोडक्ट आते गए। इसी तरह एक प्रोडक्ट है ऑप्टिमम 1, जिसका नया नाम है ग्लाइका केयर। ग्लाइका केयर न्यू नेम है, ग्लाइका केयर के नाम से अब ये जाना जाता है। और हम लोग इंडिया में नंबर 1 किस में है? डायबिटीज में। अगर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट अगर ग्लाइका केयर को यूज करता है, इसका काम है शुगर लेवल मेंटेन करना। टाइप 2 मीन्स जो लोग गोली खाकर अपना डायबिटीज कंट्रोल करते हैं उसे टाइप 2 कहते हैं। इस गोली को खाना खाने के 1 घंटे पहले, आफ्टरनून में और नाइट में डिनर के पहले लेना है, लंच एंड डिनर के 1 घंटे पहले लेना है। 3 to 6 मंथ में इंग्लिश दवा छूट जाएगा 100 में से 90 लोगों का। प्लस अगर इंग्लिश दवा से शुगर कंट्रोल रहता है, उसके बावजूद डायबिटिक न्यूरोपैथी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैप्सूल है लीनगार्ड, पतले होने के लिए। पेटेंटेड प्रोडक्ट है, थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। उस प्रोडक्ट को भी लेने से वजन घटना शुरू होता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है R3 पावर। R3 पावर ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम के लिए है। एक प्रोडक्ट है लेडीज के लिए स्पेशली डिजाइनिंग किया गया है, ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग। 40 प्लस की लेडीज के लिए ये डिजाइनिंग किया गया है। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करना। लेडीज के अंदर देखो एक चेंज आता है। 40 के पहले जब तक हार्मोनल चेंज नहीं है तब तक लेडीज की बॉडी का शेप ऐसा रहता है, जस्ट सीधा ग्लास। 45 के बाद उल्टा ग्लास, लाइक दिस। यस, पहले ऐसा रहता है, बाद में ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। जब तक एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस है, लेडीज के हेयर अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एट्रैक्शन रहता है। इसीलिए देखो काफी लोग जो है 45-50 के करीब के, उसको क्वेश्चन जब पूछा कि भाई आप मैरिड हो, फटक से हाँ यस नहीं बोले। क्यों नहीं बोले यस? कुछ गड़बड़ है, जाने दो, ठीक है। तो इसका काम है एस्ट्रोजन को बैलेंस करना। 40 के बाद डेली 1
ऑस्टियोस्ट्रॉन लेने से एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन रहेगा। जिसको मेनोपॉज चल रहा है, मेनोपॉज के वक्त लेडीज के अंदर चेंजेस आता है। क्या चेंज आता है? उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी पागलपन, कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन। तब आदमी क्या बोलता है? अब तो पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कोर्ट में केस जाता है, डिवोर्स होता है। ये प्रोडक्ट हार्मोनल बैलेंस करके काले कोट वाले से बचाता है। एक प्रोडक्ट है लिवर सपोर्ट। लिवर सपोर्ट दुनिया की ये पहली कंपनी है जो शराब पीने वाले को इज्जत की नजर से देखती है। आपको पता है लिवर सपोर्ट के बॉटल के बॉक्स के ऊपर 2 प्याले हैं। आदमी अकेला नहीं पीता है, 2 ग्लास है ना बॉटल पे। इसीलिए एक शेर है, कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है। अगर आप शराब पीने वालों को ये समझा दो भाई शराब पीने के 2 बड़े नुकसान है, मैं आपको बता देता हूं। क्या नुकसान है 2? पहला नुकसान ये है कि आपका लीवर खराब होगा, हेल्थ खराब होगा। दूसरा नुकसान ये कि बहक जाने से, आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहने से क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, दोस्त का झगड़ा होता है, बिजनेस में गलत डिसीजन होता है। यस और नो? क्या वो शराब छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये दोनों टाइप के नुकसान के बचने के लिए लिवर सपोर्ट डेवलप किया गया है। लिवर सपोर्ट जो है दोपहर को खाना खाने के बाद 1 गोली खानी है और रात को ड्रिंक के 1 घंटे पहले 1 गोली खानी है। ड्रिंक के 1 घंटे पहले। अगर आप कहोगे मैं भूल गया तो नो प्रॉब्लम, बॉटल खोलो, ढक्कन खोलो, 1 गोली मुंह में डालो, दूसरा ढक्कन खोलो, 1 घूंट लगाओ। तो इस तरह कंपनी के पास यूनिक प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली मैं 5.5 घंटा ट्रेनिंग में बोलता हूँ, रूटीन में मैं 1.5 आवर्स में सब प्रोडक्ट पे डिटेल बताता हूँ। अभी वक्त ज्यादा नहीं है। फाइनली एक कहूंगा, अभी दूसरा हिस्सा बाकी है कि सामी क्यों करना चाहिए। तो एमएलएम की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया है, आ चुका है और बहुत बड़े लेवल पे ये जाएगा। सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा। हम जब कंपनी चूज करते हैं तो कंपनी तो देख ली, लेकिन उस कंपनी करने से मुझे क्या फायदा? बिग क्वेश्चन। तो अगर हम देखते हैं इस प्लान की 3 खासियत है। पहली खासियत बाइनरी है, दूसरा जनरेशन इनकम है और तीसरा है रॉयल्टी है। कई कंपनियों में बाइनरी एंड रॉयल्टी होता है। रॉयल्टी लेने के लिए टफ कंडीशन होती है, ले नहीं पाता है। अगर जनरेशन की बात करें तो 6 के मल्टीप्लिकेशन में 8 लेवल तक स्पॉन्सर करते जाओ तो 3 CR पर मंथ आपको आएगा। इतनी बड़ी इनकम देने वाली कोई कंपनी आज मार्केट में नहीं दिख रही है और मेरे और आप जैसे लोग इतनी इनकम ले पाएंगे ये मुझे भरोसा है। मुझे 98 से एमएलएम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है, लोग मुझे जानते हैं और इसमें भी हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने के लिए एक मिशन बनाया है। तो मैं इतना ही कहूँगा, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी 7 ईयर की एज में, बुलंदी पिक्चर का नाम था। उसमें राजकुमार का एक डायलॉग है, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से। इट मीन 50% सक्सेस टाइम डिसिप्लिन से मिलती है, 25% लक एंड 25% हार्ड वर्क। तो आज राइट टाइम है, आप इमीडिएट जुड़ जाओ, प्रोडक्ट को समझ लो, प्लान को समझ लो, एक्शन में आ जाओ। तो क्या होगा? लाइफ बदल जाएगी। फाइनली एक शेर कहूंगा, आज आपकी लाइफ कैसी है? आज आपकी लाइफ कैसी है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन जिस दिन ये कंपनी शुरू कर दोगे और कुछ वक्त के बाद ये शेर बदल जाएगा। क्या है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। थैंक यू। तालियां हो जाए इनके लिए। Thank you so much for having shared such good words and हाँ, you told about एक सारथी, सारथी है, एक घोड़ा गाड़ी है, एक दुनिया है जहाँ पे थोड़ी सी गरीबी है, थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी परेशानियां हैं, जहाँ पैसे की कमी है, और एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे पैसा है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ है। एक सवारी है जो यहाँ से वहां जाने वाली है। उस सवारी को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर मजीद साहब। आपको करना कुछ नहीं है, बस उस सवारी में बैठ जाना है। आप तकलीफ से, जो भी प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकल के आप
इस जहां में आ जाएंगे जहां पे आपको तंदुरुस्ती है, सेहत है, पैसा है, सब कुछ है. I think that is what he wanted to communicate with us. Well, ladies and gentlemen, now I'd like to call upon onto the stage R.C. Oja. Let's give a big round of applause to Mr. R.C. Oja. Good morning, everybody. Good morning. सब लोग एक्साइटेड हैं? Yes. मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ. सपना देखा था करोड़पति बनने का, अमीर बनने का, लेकिन मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला था. The whites clap for him. Good spirits, let's give a big round of applause to him. And in the same way, we all have one or the other spirit in ourselves, one or the other thought in our mind to make India number one. I think this is a footstep for us to make India number one. Alright, we have one brand ambassador abroad. Who it is? Who is it? Who is it? Dr. Majid. Dr. Majid, right? How many people is Dr. Majid? How many? One? He's only one? And how many are we sitting in the hall? At least about 250? When one person can create such a big difference, who can become the brand ambassador of one country, we 250 people, can't we become the brand ambassadors of the whole world? Let's give a big round of applause to ourselves. We just need to have it in us. Just to tell you the inspiring story about Doctor. When he was 23, he had a burning desire to leave a mark, to make India proud, to make himself proud, and to make his mother proud, who's been supporting him in every walk of life. While he was trying to do so, his mother was supporting him in every single thing. And he proved it. He had the burning desire. All we need to do is, we just need to have the burning desire in us and work straight on to our work. Well, ladies and gentlemen, the next person who's going to join us to share a few words is going to be the last person, is from Andhra Pradesh, Chapatlu Kottande. Ladies and gentlemen, I'm talking about Imani Srinivas. Let's give a big round of applause to Imani Srinivas. All right. Continue the dance. Good evening, all of you, on behalf of Sami Direct. Good evening. Good evening. First of all, ladies and gentlemen, request our CEO, Mr. Rajesh, to kindly deliver the word of thanks to you. Let's give a big round of applause for the man behind the show. Thank you, Asif. Good evening. Good evening. Are you guys excited? Yes. Dear leaders, Diamond leaders, Diamond Director Jayesh, Harinder Ji, all my leaders from Kerala, Karnataka, Andhra, Odisha, Rajasthan, and every part of the country. Today, as I said, it's one more historic day and an important day for all of us. One more product being added to our portfolio, and we are entering a very big segment. It's a very growing segment in the nutraceutical industry, and this will open up ample opportunity to expand our business, because a lot of people are having problem with diabetes, obesity, cardiovascular disease, and the origin of all these diseases is one thing: diet. And we are bringing one balanced diet for everyone. The last 1 year or so, most of you, or rather all of you, worked hard to take Sami Direct, to bring Sami Direct to the expectations of Dr. Majid, and which actually the entire Sami and Sabinza group is proud about and talking about. Actually, everyone is inspired in Sami and Sabinza, be it Sabinza US, be it Sabinza Japan, be it Sabinza Korea, be it Sabinza South America, everyone. I got a request from Sabinza South Africa, could you send some samples of this protein before it was launched in India?
So people are wanting. There were some business visitors in SAMI Labs who wanted to come and associate with us, and when they look at this product, they immediately wanted this product for Philippines. So, as doctor promised in our previous meetings, that all the new products, all the new molecules, all the new opportunities will only be made available to SAMI Direct and through SAMI Direct to the consumers. And I think this is one example which he fulfilled that claim, and what he promised he delivered. And in the coming period, we will see many more new products in the beverage form, in the cosmeceuticals and in the nutraceuticals. Researched value-added products we will be launching into the market, which will help us to expand our consumer base, expand our distributor base, expand our business in a strategic way, and reach out to people, and we will be able to build a business which will be solid, strong and long lasting. This is what we need as a career. This is not a job, this is not a short-term objective. This is going to be a career, lifelong career, which we want to pass on to our kids, next generation. All of you should be able to build this business, take it to a level and pass on to your next generation. And surely with the kind of strategies and the vision, Dr. Majid and the entire management and the leaders together, we will make it possible. To make this happen, to introduce all these products, to back you up, it would not have been possible if it has been backed up with 100% dedicated, committed team of SAMI Direct and SAMI Labs and entire group. I take this opportunity to thank my entire team at SAMI Direct, and I'll request all of them to come on stage. Ranjit, Sham, Hema, everyone, I would like to come out. Without these people working, entire team, sir, Samir, Ajay, they work, their only ambition and the dream is to support our beloved distributors, to help them to achieve their dream, and in every possible way extend our support to all our distributors. Ram, Jayesh, Ranjit. Let me introduce, she is Preeta. Sani Sebastian, she is the nutritionist who recently joined. Preeta works in the finance department. Anandini Swaminathan, she has recently joined as the nutritionist and scientific support team. She is Sanjana. Hema Oja, most of you might be knowing her. Divya, Sham is the hero and the Shah Rukh Khan for all of you. Ranjit, who is always there to support in all situations and work with you, ensure that everything is being done as per your expectations, and we will continue to support and the team, and we'll keep on expanding. Samir ji has been always a pillar of strength from the day one, before the inception. From the day when we started actually conceptualizing the SAMI Direct, he was always there with us, and he's always there with all of you to ensure that all of you achieve your dream and we take this business to a rocking height. And there is Sarvesh, Chandil, Parvez, they all are there in the sales counter. And also there is an offer which is starting today, 3rd, 4th, 5th, 6th. 6th evening it gets over. Buy 3, get 1 free. Vanilla. Ladies and gentlemen, dear leaders, please make use of this offer and give a kickstart to your business with the protein. Please take it with a strong, we want to send out to all the protein boys in the market that we are coming with a qualitative value added product in the market. Please make use of this.
Thank you so much. It's been a real pleasure to have all of you over here, and all the best. May God bless you with good health, happiness, and abundance of wealth. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, may I request you to give a big round of applause to whole of the team of Semi Direct. Thank you so much for being present with us. It's a pleasure to have you all. And congratulations to everyone.